So good afternoon everyone. I am Dr. Manpreet Saluja from SPS Hospitals. I am the head of Cardiothoracic and Vascular Surgery Department. ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਲੰਗਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਰਜਰੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਗਈ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲਸ, ਸੋ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? हार्ट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल ऑफ द बॉडी। ये 4 ਤੋਂ 5 लीटर ब्लड पंप करती है एवरी मिनट ड्यूरिंग रेस्ट। ओके, सो इट सप्लाइज ब्लड, हार्ट जो है वो पंप करता ब्लड एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में सप्लाई करता। सो यदि हार्ट के अराउंड भी आर्टरीज होंगी जिन्होंने कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, हार्ट में ब्लड सप्लाई करती हैं, दीज आर कोरोनरी आर्टरीज। सो एक डिजीज होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की होता है, प्रॉब्लम की होती है ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਐਂਜਾਈਨਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਹਾਰਟ ਦੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ, ਇੰਟੀਮਾ, ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਸੋ ਇੰਟੀਮਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਬਲੌਕਸ ਦਾ ਆਰਟਰੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ एंजाइना या जिन्होंने कहते हार्ट अटैक वो हो सकता है। सो इट इज़ अ मिथ कि कोलेस्ट्रॉल जो आता है फैट डिपोजिशन ओल्ड एज होता है, नहीं, इट स्टार्ट्स एट अर्ली एज एट अराउंड 2 years ऑफ एज। तो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है एंड ड्यू टू आवर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स या हेरिडिटी चेंजेस या हेरिडिटी जो होंगे कि किसी हेरिडिटी होंगे या फिर एथनिक जो होंगे मेजरली बेसिकली एशियन पीक पॉपूलेशन उन्होंने कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होता है ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਬਟ ਇਟ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫਟਰ 40 years of age। ਸੋ ਅਬਵ 40 years of age we have to be very cautious about our heart। ਸੋ ਅਦਰ ਆਰਗਨਸ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸਲਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਵਾਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਚੈਮਿਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। सो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज? की सिम्टम होते हैं आपको पता लगे कि अपने हार्ट डिजीज हो सकता है। सो एक सब तो मेन सिम्टम है एंजाइना। एंजाइना मीन्स पेन। सो व्हेन यू वॉक और या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी नॉर्मल बैठे बैठे भी कई बार ऐसे लेफ्ट साइड चेस्ट या आर्म्स या बैक कितने भी पेन हो सकता है, दैट पेन कैन बी एंजाइना। सो हाउ टू डायग्नोज दैट? एंड दिस एंजाइना लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, लगातार नहीं होगा, मतलब लगातार 24 घंटे या 12 घंटे नहीं होगा। इट इज़ अ शॉर्ट पीरियड, 15-20 मिनट वास्ते आया तेज अगर तो हो सकता है पैल्पिटेशन हुए या हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाए या दूसरा तो स्वेटिंग आ जाए, ये चीज़ें सिम्टम ना हो सकती हैं। सो इट लास्ट फॉर सम टाइम एंड इट अगेन गोज बैक। सो दिस इज एंजाइना। या इट कैन लीड टू मेजर हार्ट अटैक। अगर मेजर हार्ट अटैक मीन्स पूरी ब्लड सप्लाई रुक गई उस एरिया की हार्ट की, सो वो पेन लगातार कंटिन्यू करेगा, दैट इज़ वेरी सीवियर पेन एंड दैट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज MI या जिन्होंने कहते हैं हार्ट अटैक। सो हाउ बिग इज द प्रॉब्लम? दिस इज द नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड। जो लाइफ जी हैगी सब तो ज़्यादा जाती हैगी है पूरे साल जिन्होंने कहते हैं मौत का मोस्ट कॉमन कारण जो फर्स्ट कारण दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस तो बाद बाकी चीज़ें सारियाँ आती हैं। सो अपन क्यों हो सकता हार्ट डिजीज? इंडियंस आर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज टू हार्ट डिजीज। सो अपनी जेनेटिक्स से इतना दी है कि अपन हार्ट डिजीज से प्रोन होंगे। अबव 40 years of age we are at more risk than the other population, other western population, we are at more risk। Okay? So why? Because and other causes can be diabetes and other high blood pressure and environmental causes like urbanization and अपने जो sedentary lifestyle है, that can be another cause of heart disease। So
So what increases the risk? The risk के ਜਿਹੜੇ दो फैक्टर्स है या मॉडिफाइबल फैक्टर्स एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। फैक्टर्स जिन्हों आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो की है अपना खान पान हो गया, अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जो ड्रिंकिंग हैबिट्स है वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड एक्सरसाइज। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में चेंज करके वी शुड गो फॉर एक्सरसाइज। तो दीज फैक्टर्स वी कैन चेंज। The factors we cannot change are these age, so above 45 years of age in men and above 55 of age in females. Females एक हार्मोन होता है जिन्हें कहते हैं एस्ट्रोजन, that is preventive below 45 years of age. So below 45 females ਦੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਡਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ। less than 45 years ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। above 50 years ਜਦੋਂ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, then there are more chances of heart disease. Okay, the other is male, sex males मतलब males ज़्यादा होती है disease, females कट होती है। The cause I have told you already, estrogen hormone is preventive in females. Other thing is race. Race means जो अपने Indians है या Asian race है, Asians ज़्यादा prone होते हैं heart disease है rather than these Western population. And family history. So family history is a major cause. या तारे दादाजी नो या ग्रैंडफादर या फादर में हो disease that can carry into your progeny, so तो हो सकती है। So you should be more careful, and above 30 years you should be more careful when you have a family history. So cholesterol जो होता है, it is कारण की cholesterol deposition. Cholesterol जो होता है lipid profile जो आप कराने हैं, there are multiple types of cholesterol. इधर good cholesterol होता है, bad cholesterol होता है। Good cholesterol means that prevents your heart disease and prevents the clogging of the cholesterol in the arteries. So good cholesterol is HDL, high density lipoprotein, and LDL, VLDL and triglycerides and cholesterol, they are bad cholesterols. So LDL is a bad cholesterol, that is low density lipoprotein, and HDL, that is high density lipoprotein, that is a good cholesterol. Okay. And other major cause is obesity. So due to sedentary lifestyles, अपना खान पान चेंज हो गया, सब कारण अपनी obesity मतलब मोटापा बढ़ता जा रहा है, and मोटापा and obesity is a major cause of heart disease. So we have to control our weight, and obese people have 2 to 6 times more risk of heart disease than the normal people, normal thin people. Okay. So apple shape versus pear shape means apple means थोड़ा जो fat है around the belly, जो fat है that is apple shape, okay, and जो fat lower part है that is pear shape. So apple shape is bad. Cigarette smoking is another major cause. Smoking or tobacco, these are the major cause of heart disease. इसके कारण की होता है अपने हार्ट के वेसल्स हैं और इंटीमल लेयर जी अंदर की लेयर वो खराब होती है एंड उससे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ज़्यादा होता है। So this leads to heart disease or coronary artery disease. Alcohol consumption is also a major cause. It leads to obesity and also it leads to more cholesterol deposition in the arteries. So alcohol consumption is another major cause of heart disease. Diabetes is a major killer nowadays. Diabetes जी है कि बहुत शरीर के सारे अंगों को अफेक्ट करती है, ब्रेन, किडनी, लीवर एंड स्पेशली इट अफेक्ट्स द हार्ट. सो डायबिटिक पेशेंट जो है उन्होंने जो कोरोनरी आर्टरी रिस्क है दैट इज डबल और ट्रिपल 3 times मोर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन. So diabetes is also a major cause of heart disease. So if we have multiple factors, if you are a diabetic, you are alcoholic also, and you are smoking also, then the risk increases to 10 times. So multiple factors can lead to more progressive heart disease. So every day try to make some choices. If you want to live a healthy lifestyle, go for exercise and good food habits and avoid alcohol, smoking and all these things. So and one more thing, कि अपन we neglect our health. So we should go for regular health checkups after 30 years of age. So if अपने कार वास्ते अपन जो है अपना कार को प्रिवेंट करते कार को अपन रेगुलर सर्विस वास्ते भेजना है, our body also needs regular service and regular checkups. So we should go to doctor after 30 years for a regular checkup. So preventing heart disease, how to prevent the heart disease? So there are many things you can do. सबसे पहला the activity, first of all is the physical activity,
Second is your food habits. Third is your dietary habits, already I have told you. And third is your health checkups. So food habits, yes, we have to control our fats and all things, the diet what we are taking. So low fat diet, and you should take more of vegetables, salads and fruits in your diet. And especially if you are a diabetic or you have some other things like you have uric acid disease, increased uric hyperuricemia, so uric acid thoda badh gaya hai. So you have to take a proper diet according to your dietitian's advice or doctor's advice. So proper diet is a must to prevent your heart disease. So PUFA and MUFA, that oils what we tell. So polyunsaturated fatty acids or low saturated fatty acids. MUFA, that is heart healthy. So these are low density fats in their MUFA oils. So olive oil, groundnut oil, canola oil, these are low fat oils. So we should use these oils rather than going for this ghee and this mustard oil. So PUFA and MUFA, these both oils are good for health. Soybean oil, sunflower oil. The second thing is exercise, what I have already told you. Physical activity is a must. So if you cannot do a regular exercise, just go for a brisk walk daily. 3 kilometers brisk walk should be done daily. 3 kilometers should be done in 30 minutes. The average speed should be around 6 kilometers per hour, or you should complete 1 kilometer in 10 minutes. So 3 kilometers average daily you should go for brisk walk, and that should be done in single go. ऐसा नहीं कि सुबह 1 किलोमीटर कर लिया, दोपहर को 1 किलोमीटर कर लिया, शाम को 1 किलोमीटर नहीं. You should go for 3 kilometers at a one stretch. So this will prevent your heart, this will keep your heart healthy. Okay. No need for rigorous exercise. कोई एक्सरसाइज जिम जाने की जरूरत नहीं है. जिम में जाके बहुत ज़्यादा पसीना बहाना या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, that is fine. If you can do that, it's fine. But you should take out 30 minutes from your schedule, any time of the day, morning, evening, night, whenever you get time. Just take out 30 minutes of your day. Okay. So regular exercise, it decreases your risk of heart disease by half. If you are going for regular exercise for 1 month, the risk of heart disease gradually decreases, and after 2 years of regular exercise, it will reduce it to normal levels if you are above 40 years of age. So exercise and heart disease. Second thing is smoking. Yes, you have to quit smoking. Smoking is a major risk factor. If you quit smoking and gradually after 2 years you come to normal level, normal person के बराबर आपकी risk है, जो normal person के बराबर आ जाता है. Within 3 months the risk reduces to half, and after 2 years risk reduces to normal level. So quit smoking. Don't go. So what are the benefits? Much beyond heart disease if you quit tobacco or smoking, and good diet, exercise, and quit alcohol. So these all 4 things will lead to multiple problems को हम prevent कर सकते हैं, like cardiovascular problems, cancer, chronic respiratory disease, जैसे bronchial asthma वगैरह, ये सब इन चीज़ों से अपन prevent कर सकते हैं, and you can improve your mental health. So rule 4 is cholesterol के numbers क्या है? What are the numbers of cholesterol या lipid profile जो हम check करते हैं, उसमें cholesterol का number क्या होना चाहिए? So cholesterol should be less than 200, and your LDL levels should be less than 100, and HDL, that is good cholesterol, that should be above 40. And good cholesterol को बढ़ाने का तरीका एक ही है, just go for good exercise, walking daily, and good food habits. So these are good. These are the numbers you should check in your lipid profile, and triglyceride should be less than 200. So benefits of reducing cholesterol के reduce करने का benefit क्या है? 10% reduction of blood cholesterol produces 20 to 30% decline in coronary artery disease risk. So अगर 10% आपको कोलेस्ट्रॉल कम होता है gradually, तो इससे 20 to 30% रिस्क आपका कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, coronary artery disease का. So these are the numbers you should remember. And another thing is blood sugar, as I have already told you. Control of diabetes. Diabetes का जो normal level है आजकल, fasting level, it should be less than 100, and PP means post meals, 2 hours after meals, it should be less than 140. इसको थोड़ा सा भी change किया गया है. So up to 120 the fasting level, that is normal. So you can keep your sugar up to 120 fasting, and up to 160 after meals. So these levels you should check. As and when
as you control your sugar, you will also control your heart disease. So if your family is, if someone in the family is already diagnosed with cardiac disease, what should you do? So you should control his diet, you should go for good regular exercise, and plenty of liquid intake is important. Liquid intake should be daily around 2 to 3 liters per day. Liquid में आप you can take water, you can take lemon water, you can take coconut water, or you can take low fat milk. Try to take low fat milk, और that is called जो उसको येलो वाला मिल्क होता है, इसमें मिल्क को उबाल के उसकी मलाई निकाल के और लो फैट मिल्क देंगे तो that is beneficial for you. So don't wait for a second life. We are not cats, so we should do all the measures to prevent our heart and to keep ourselves fit in this life only. Okay. So this is all I will tell you about heart. Thank you.